Good morning, students. Today we will start our fifth chapter of science syllabus. This is the chapter from biology, and its name is the fundamental unit of life, the cell. Okay, so in this chapter we will deal about cell. What is cell and how it is discovered? What are the various parts which are present inside the cell? Their functions, their structure, their diagrams, and difference between animal cell and plant cell. So we will study all these topics in this chapter. Now, any structure of a plant or animal is, when seen under microscope, it is found that it is made up of many small units. These units are called cells. Cells are very small and cannot be seen by naked eyes. So, प्लांट एंड एनिमल की किसी भी स्ट्रक्चर को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें बहुत स्मॉल यूनिट्स देखने को मिलती हैं. इन स्मॉल यूनिट्स को हम अपनी आँखों से ऐसे ही नहीं देख सकते, बिना किसी डिवाइस की सहायता से या स्पेसिफिक किसी लेंस की सहायता से हम इनको नहीं देख सकते, और इन स्मॉल स्ट्रक्चर्स को ही हम सेल्स कहते हैं. सेल इज़ ए लैटिन वर्ड which means a small little room. Cell is the smallest structural and functional unit of life. So what is the appropriate definition of cell? Cell is the smallest structural and functional unit of life. There are two types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell, which will be studied later on in this chapter. So cell, जैसे एक बिल्डिंग जब बनती है, घर बनता है, तो उसकी हर जो ब्रिक है वो इम्पॉर्टेंट होती है. हर ब्रिक से जाकर वो बिल्डिंग पूरी तैयार होती है. उसी तरह से प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उन सब की जो बॉडी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल होती है. ईच एंड एवरी सेल इज़ इम्पॉर्टेंट, सो विच गिव्स अस द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, एंड दीज सेल्स टुगेदर perform functions for the body. So cell is called the structural and functional unit of life. Now regarding discovery of the cell was first discovered by an English scientist, Robert Hooke. He observed somewhat structure given in this diagram, honeycomb-like structure. Honeycomb-like structure, he observed that the structure of the cell is such like as given in this diagram. So, discovery of the cell, Robert Hooke in the year 1665 discovered cell. So, he looked a thin slice of cork through a compound microscope. He observed tiny, hollow, room-like structures. He called these structures as cells, because they reminded him of the rooms that monks lived in. So he named them cell. Cell means a small compartment or a little room. So he only saw the outer wall of the cell, because the cork cell were not alive. So it was the Robert Hooke who discovered cell first time in the year 1665. सो व्हाट हैपन्स, रॉबर्ट हुक ने एक डेड कॉर्क सेल में जो है अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उस समय उनके पास था उसमें कॉर्क सेल को देखा, और उनको उसमें जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उस जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी. और उन्होंने उनको केवल कई सारे कंपार्टमेंट दिखे, सेक्शंस दिखे, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया, क्योंकि सेल का मीनिंग लैटिन वर्ड में होता है ए लिटिल रूम. सो उसको देखने के बाद में उन्होंने उसको सेल नाम दिया. तो इन दिस वे द वर्ड सेल वॉज डिस्कवर्ड. ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल टेक्स प्लेस. नाउ देर आर सम मोर डिस्कवरीज रिलेटेड टू द सेल्स.
सेल के साथ और भी बहुत सारी डिस्कवरीज जुड़ी हुई हैं जो सेल के साथ हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Cell, the discovery of cell, Robert Hooke in the year 1665. Now, free living cells in pond water, bacteria. Free living cells in pond water, Anton von Leeuwenhoek in year 1670. In the year 1674, it is given 1674 in your book, so correct this. So Antony Leeuwenhoek was the scientist who discovered the living cell first time. He discovered living cell first time in his primitive microscope. Okay. Now nucleus was discovered by Robert Brown in the year 1831. In the year 1831, Robert Brown discovered nucleus. Now protoplasm was discovered by Purkinje in the year 1839. Protoplasm means the living material which is present inside the cell. So the living material was discovered by Purkinje in the year 1839. Later on, cell theory. Cell theory was given by Scaledin and Swan. Scaledin in the year 1838 and Swan in the year 1839 in plants and animals respectively. Okay. Now after that, Verco also refined the cell theory, and that refined cell theory was given by Verco in the year 1855. So these are the important discoveries in the field of cell. Cell theory was given by three scientists. Cell theory was given by three scientists. So what are the main points of this theory? First, living things are made up of cells. Second, cells are the basic unit of structure and function of living things. Scaledin worked with plants. Scaledin mainly worked on plant cells, and Swan worked mainly on animal cells. So Scaledin and Swan, these are the name of the scientists who gave cell theory. So Scaledin mainly confined with the discovery with the plants, and Swan with the animals. Next important point of cell theory is cell come from other cells. New cells come from the pre-existing cells. नए सेल्स पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं. ये नेक्स्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का, एंड दिस पॉइंट इज गिवन बाय वर्को. Okay, Verco. This point was given by Verco in the year 1855. So Verco saw cells dividing under microscope. So he gave this point about the cell theory. The cell comes from other cells. What are living organisms made up of? All living organisms are made up of cells. Cells can be easily seen in an onion peel. Shape and size of the cell varies according to the function. Now you have seen the slide of onion peel under the microscope. You have seen that brick-like structures you have observed in your previous classes. So you can easily observe the cells of onion peel under the microscope. But all the cells are not of same size and shape. So the shape and the size of the cell varies according to the function. It may be cuboidal, polygonal, elliptical, small, or may be very large. The smallest cell is PPLO, pleuropneumonia-like organism. So the smallest cell. It is also called mycoplasma. So mycoplasma is the smallest cell. The largest cell, ostrich egg. Ostrich egg is the largest cell. The smallest cell in our body or in human body is red blood cell, RBC. So RBC is the smallest cell in our body. And largest cell in our body, nerve cell, which is also called neuron. Neuron is the largest cell of human body.
So these are the pictures showing the smallest and the largest cell. The smallest cell, that is mycoplasma. The largest cell, the ostrich egg. The smallest cell in our body, RBC. The largest cell in our body, nerve cell. So these are the pictures of smallest and the largest cell. नाउ सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक जैसे सेल्स नहीं होते, उसी तरह से सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल की संख्या और उनके नंबर भी एक जैसे नहीं होते. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक ही सेल की बनी होती है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर organisms. So there are some organisms which are made up of only single cell. Such organisms are called unicellular organisms, such as amoeba, euglena, some bacteria, paramecium. So these all are single celled organisms. These are made up of single cell. Okay. Next, multicellular organisms. Those organisms whose bodies are made up of more than, or they are made up of many cells, group of cells. So such organisms are called multicellular organisms. When many cells are grouped together in a single organisms, then they are called multicellular organisms. Fungi, plants, animals, these all are multicellular organisms. What about human beings? Yes, human beings are also multicellular. Our body is very complex. Single cell can't perform all the functions. So we are multicellular organisms. Okay, there are billions or trillions of cells in our body. So different cells perform different functions in these organisms. Every multicellular organism has come from a single cell. All the cells thus come from pre-existing cells. Cells which are produced from single cell may differentiate to have different structures and function. Many multicellular organism, in multicellular organism there is a division of labor, which means that different parts of an organism perform different functions. In multicellular organism there is a division of labor. Multicellular organisms की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, एक सेल सारे काम नहीं कर सकती बॉडी के. देयर आर वेरी मैनी सेल्स, सो फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन देयर इज़ अ स्पेसिफिक डिविजन ऑफ लेबर. कार्य का विभाजन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, बिकॉज देयर इज़ अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स. सो so different types of works are performed by different types of cells. So there is a division of labor. So and there is also, we can say, there is a complexity in body from the cellular to the organ system level. सेल का ग्रुप कहलाएगा टिश्यू का ग्रुप कहलाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम. सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मे बी सम ऑर्गन्स और मे बी ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में डाइजेशन करने के लिए अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम. रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है. सोचने संबंधी काम करने के लिए नर्वस सिस्टम. ओके, एक्सक्रीशन संबंधी कार्य के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो देयर आर different systems which perform our body function. So as there is a division of labor, so there is a clear cut differentiation of division of labor. So there are multicellular organisms, different cells perform different functions. So pictures of some unicellular organism: amoeba, unicellular organism; paramecium, it is also a unicellular organism. Then euglena, unicellular organism. Now multicellular organism: fungus, various types of fungus. Fungi, these are multicellular. They are different cells for performing different types of functions. Plants, multicellular organisms, they have complex system.
So they are multicellular organisms. Now animals also multicellular. There are different categories of animals, whether the animals are reptiles, insects, they are mammals, okay, they are fishes, these are insects, these all are multicellular organisms because their body is complex. So these are multicellular organisms. Now various cells from human body. In human body there are various types of cells. कि हमारी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. ये सेल्स अलग अलग ऑर्गन्स में जो सेल्स हैं उनके शेप भी अलग अलग हैं, उनके साइज़ अलग अलग हैं, उनका जो संख्या है उनकी नंबर्स हैं वो भी अलग अलग हैं. तो हम ये नहीं कह सकते कि एक बॉडी में सारे सेल्स एक जैसे होंगे, उनका शेप एक जैसा होगा, उनका साइज़ एक जैसा होगा. ये ट्रू नहीं है. एक बॉडी में डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के सेल्स मिलते हैं. जैसे ह्यूमन बॉडी में कुछ सेल्स के एग्जांपल्स, जैसे हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी आर स्मूथ मसल सेल्स. मसल सेल्स की स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस डायग्राम में, ऐसे स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है. ब्लड सेल्स होते हैं स्फेरिकल होते हैं, रफली स्फेरिकल होते हैं मोस्टली, ब्लड सेल्स की शेप है. देन नर्व सेल्स हाईली ब्रांच्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं और लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी में. देन बोन सेल्स की स्ट्रक्चर्स इस तरह से ब्रांच्ड होती है और रफली स्फेरिकल है. देन फैट सेल्स, इट इज़ ओवल शेप्ड होती है इसकी स्ट्रक्चर. देन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म इज़ इलोंगेटेड सेल्स, मोटाइल स्ट्रक्चर हैविंग टेल and head and tail. Then ovum, it is spherical, roughly spherical structures. So these are the examples of the some cells from our body. Okay students, see these all slides carefully and learn them, read them. Okay, thank you.